trigonometry में I'm हम्म able to do the I get the concept behind the chapter, but जैसे application है उसकी हम्म at times I'm not able to do that. किस किस वाले में? So आपको एक क्वेश्चन भेज देता हूँ मैं. उसका वीडियो देख लिया तुमने? हाँ, I saw. श्योर। And then जैसे वो है सीक्वेंस एंड सीरीज. हम्म। उसमें भी जैसे ज्योमेट्रिक मीन के जो क्वेश्चंस हैं अच्छा। कभी कभार वो नहीं होते. बताओ। I'll send. 33 and 34. दिस इज 34 is I think NCRT. हम्म similar question I think I must have done in the class also. So it's a quadratic equation x square minus 3x plus p. So you can take the roots. Roots are c and d. So sum of roots you can apply. Product of roots you can apply. Sum of root is minus b by a, so will be 3, right? Hmm. And this would be p. Then you have another quadratic equation. X square minus 12x plus q is equal to 0. And then roots are a and b. No, a, b are the roots of this. So this is a plus b is equal to 3. This is a into b is equal to b. This has root c and d. So c plus d is 12. C into d is q, right? Hmm. And then they are gp. A, B, C, D. If they are in gp, then you can take them like this. A r square, AR cube, Yeah. right? Hmm. Then you can use over here. This would be a plus AR equal to 3. Hmm. This would be AR square plus AR cube is equal to 12. Okay. Then you can divide these two. You get the अच्छा. value of R. Okay. So AR square common, A from this, A common is 12 by 3. R square is 4. R could be plus minus 2. ठीक है. And then you can use this. Okay. Like you're supposed to find A square R हो जाएगा. hmm, Q plus P. Prove that Q plus P over Q minus P. So Q is A AB. square R. Mm, P is P is AB and Q is CD. Hmm. And then you can substitute this. AB कितना हो गया? AR A square. square R. A square R. CD would be Uh, A square R5. yeah. So A square R5 minus A square R. Now you can take common and substitute Hmm. values. You get ठीक है. answer. Got जाएगा it. ना? हाँ, ये तो हो जाएगा. And the other one उसके नीचे. उसके नीचे में भी एक स्पेसिफिक मेथड है, ये भी हमने क्लास में किया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन. सम ऑफ अच्छा. शायद हमने वीडियो देखा नहीं है ढंग से. सम ऑफ टू नंबर्स, इट सेज सम ऑफ टू नंबर्स दैट इज a plus b is 6 times their geometric mean. Geometric mean is always under root ab Hmm. for two numbers. Yeah. So you bring 2ab to root ab in the denominator. So this will be 3. Okay. And then
You can apply component or dividend. You know that? What is component or dividend? Yeah. If you have A by B is equal to C by D, then A plus B over A minus B equals to C plus D over C minus D. You can Hmm. apply this. Okay. So A plus B plus 2 root AB. This is A plus B minus 2 root AB Hmm. equal to 3 plus 1 by 3 minus 1. Yeah. So this would be a perfect square. Root A plus root B whole square. This is root A minus root B whole square. This would be 4 by 2. 2 is to Hmm. 1. Then you take root because ultimately we're supposed to find A by B. Hmm. Square rooting both the sides. Again, you apply component dividendo. So root A plus root B, root A minus root B. Hmm. Root A plus root B minus root A plus root B. This would be root 2 plus 1, root 2 minus 1. So 2 root A and this is 2 root B. Hmm. Squaring both the side and you get your answer. Okay. So this ठीक है, question got has it. a specific method. Got it. Or उसके ऊपर एक ट्रिको का क्वेश्चन है, साइन क्यूब वाला. सो जब एक्सपोनेंट्स आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, मैं तब नहीं कर पाता. हम्म देखो राइट साइड देखो पहले आंसर देखो उसका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है तुम्हें हम्म. उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा आंसर में साइन 3x आ रहा है ओके. सो 2 pi by 3 is 120 and 4 pi by 3 is 240 हम्म. sin 180 sin 120 plus x and sin so either we can apply a cube plus b cube ओके. or else we can directly do it or else we can use triple angle formula like since answer में sin 3x आ रहा है ना so we हम्म. can use this identity also sin 3a 3a is 3 sin a या. minus 4 sin cube a हम्म. so I can use 4 sin cube a is equal to 3 sin a minus sin 3a हम्म. and then you can bring 4 in the denominator so either we simplify all of them like this ओके. so this becomes 1 by 4 this would be 3 sin x हम्म. minus sin 3x right हम्म. the second one will become 1 by 4 3 sin 120 plus x हम्म. and minus sin 3x that is 3 into this 360 plus 3x या. and the last also 1 by 4 3 sine 3 times of this so 3 times of this would be 720 हम्म. plus 3x minus sine no I did ulta this would be this first term would be 3 sine a na 3 sine a that is 240 plus x and this would be sine 720 plus 3x right ओके. now in any trigonometric function you can always leave multiple of 2n pi if you have any trigonometric function 2n pi plus minus theta is always plus minus you can always neglect this ठीक है. so you can neglect 720 you can remove this 1 by 4 I take out so this is 3 sin x minus sin 3x this is 3 sin 120 plus x this is minus sin 3x this is 3 sin 240 plus x हम्म. and this is minus sin 3x right हम्म.
This will cancel. No, it won't cancel. This will add up. This, this, and this will add up, right? ठीक है. And these other terms you can club by taking 3 common. हम्म. Sin x minus sin plus sin 120 plus x हम्म. plus sin 240 plus x. And this Okay. is minus 3 sin 3x. यहाँ पे you can apply sin c plus sin d. Because in the answer, you have हम्म. what is the answer? The answer. It's 3 by 4 sine 3x Yeah, minus that. 3 by 4 sine So we 3x. already have that answer with us. Minus 3 by 4. This term has to be 0. So when you apply sin c plus sin d, this will हम्म. become minus sin x, which will cancel with this. Okay. And you get your answer. Sin c plus sin d, you know, na? Yeah. 2 sin c plus d by 2. So 360 plus 2x by 2. Sin Yeah. c minus d by 2, that is sin. No, cos c minus Cos हो d. जाएगा. Yeah. This will be cos 120. हम्म. I open the bracket. तो cos 120 माइनस हाफ होता है, वो इससे हम्म. कट जाएगा, या माइनस साइन आ जाएगा. साइन 180 प्लस एक्स वुड बी माइनस साइन एक्स है. Yeah. 180 प्लस एक्स वुड बी माइनस साइन एक्स. सो ये तो ऐड हो रहा है, कुछ गलती हो गई क्या? साइन 180 प्लस एक्स वुड बी माइनस साइन एक्स, एंड दिस ऑल्सो माइनस. तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा. देखो क्या गलती हुई. साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2. दस 120. तो ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है. माइनस भी होगा ना. हाँ, 120 माइनस 240 होगा, सो माइनस विल. अच्छा. बट वो कॉस तो वही होता है. हम्म. कॉस ऑफ या. माइनस 120 इज कॉस 120. या. देखो कहाँ गलती हुई है, कुछ हुआ है गड़बड़. साइन एक्स साइन 120 प्लस साइन 240 प्लस एक्स. साइन सी प्लस साइन डी 180 प्लस एक्स. तो थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव ही होगा, वो भी नेगेटिव हो गया. हम्म. इट्स एडिंग अप. तो ऐड हो रहा है. इन केस यू ओपन इट, ओपन करके देख लेते हैं वो कट कट रहा है नहीं कट रहा है. आई डाउट वो कैंसिल होगा. करूँ, इफ आई ओपन इट साइन ए प्लस बी से, या. साइन 120 कॉस एक्स कॉस 120 साइन एक्स, साइन राइट. एक्स. या. साइन 240 कॉस एक्स प्लस कॉस 240 साइन एक्स. साइन एक्स. साइन कॉस 120 कॉस 240 दोनों माइनस हाफ होते हैं. हम्म. तो ये माइनस हाफ हो गया, ये भी माइनस हाफ हो गया, है ना. हम्म. तो ये माइनस साइन एक्स हो गया. तो दैट माइनस, कैंसिल आउट विद द प्लस साइन एक्स ना. राइट. एंड दिस इज, दिस टर्म इज नेगेटिव, दिस टर्म पॉजिटिव. ये भी कट गया. इसमें तो कट रहा है, वहां क्यों नहीं कट रहा? सरप्राइजिंग. ऐसे कैसे हो सकता? यहाँ पे क्या किया मैंने? 120 240 सही था ना. पहले कॉस आता है क्या? नहीं नहीं, वो साइन नहीं. सी माइनस डी में आता है. ओह दैट अच्छा. इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 360 प्लस 2x बाई 2. साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. कॉस 120 is minus half. Minus minus plus. Surprising. How is that possible? कॉस 120 बाई 2 किया आपने. हाँ, वो नहीं किया ना. वही गलती हो गई.
ठीक है। तो वाई हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। और इतना ही है अभी के लिए तो। ऐसे सो आई डोंट नो हाउ टू start with these kind of questions. see you, whenever you have some these kind of doubts ना, you can WhatsApp me also. ठीक है। So you But don't wait for the class, or हम्म in the class also you can ask sometime. There's no worry, But during the class also I can answer. हाँ बट सर आप एग्जाम में थोड़ी हो गए मेरे साथ। नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन ये क्या होगा कि प्रैक्टिस के साथ होगा ये। मोर यू प्रैक्टिस, हम्म इसका एक तरीका और होता है, थोड़ा सा हिंट देख लो, फिर दोबारा हम्म करो, फिर अटक गए थोड़ा हिंट देख ओके। लो, लाइक दैट। ठीक है। ऐसा ओके। है ना। एंड ठीक है। सारे क्वेश्चन करोगे, जितने ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे ना, उतना ज्यादा बेटर हो हम्म जाएगा। ठीक ओके। है। और ठीक कुछ है। नहीं है अभी, है ना। नहीं अभी तो आई डोंट थिंक हाँ, सो तो कुछ है। वाइल स्टडिंग अगर कुछ याद है मेरे को व्हाट्सएप पे कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। ओके श्योर। ठीक है, तो हम फिर क्लास विल हैव एट 5 o'clock, राइट। 5 o'clock। नहीं नहीं सर, व्हाट टाइम यू हैव 4:45 होता है ना। आज नहीं, आज 5 होता है। अच्छा। आज 5 होता है, सैटरडे को 4:45 होता है। ओ ओके। आज होता है 5 to 6:30। ठीक है नहीं क्योंकि आपने 4:45 का टाइम डाला हुआ है अच्छा, जूम मीटिंग पे। आज या नहीं नहीं, वो या विल बी 5 बिकॉज ट्यूसडे वाली क्लास 5 होती है, उसने गलत कर दिया हुआ है, तो सैटरडे अच्छा। क्लास इज 5, 4:45। ओके। ठीक है। ओके।